हेलो वीवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। वीवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, ऐसी दूसरी वीडियोस देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो का जो केस है वो एक पैसेज है और उसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पैसेज है, डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, but it is clearly better than any other alternative that we know. It offers better chances of good decision. It is likely to respect people's own wishes and allow different kind of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows us ways of correcting its mistakes and offers most dignity to all citizens. Clear? Let's discuss question answers based on this passage. First question is, most preferred form of government in the world. Options are democracy or dictatorship or monarchy or single party. Answer is democracy. Democracy is the most preferred form of government in the entire world. Why? Because it provides dignity to the citizens, it has the options for correcting its mistakes, and so many other things. Next question is, in democracy there is a room for public discussions on. Options are government rule or government mistakes or government correction or all of the above. Answer is all of the above. That means in democracy there is room for public discussions on the rule made by governments and the corrections made by government and mistakes also. Next question is, democracy is considered better than other type of government because it offers. Options are dignity to citizens or better chances of good decision or both 1 and 2 or none of the above. Answer is both 1 and 2. It provides dignity to citizens and better chances of good decisions because many people take decisions on a single issue. Sometimes decision delays because of the participation of many people, but most of the time the decision is best in favor of the citizens. Next question is, one non-democratic feature of democracy is. Options are leaders keep changing or parliamentary system or secularism or federalism. Answer is leaders keep on changing. Non-democratic feature of democracy is leaders keep on changing. Because of democracy, people have right to elect a person of their own choice. That is why leaders keep on changing, because of which decision delays and some other problems create. But on the other hand, democracy is preferred by entire world, people of entire world. That is all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।